So let's now see the next question. Read the following statement about artificial system of classification and choose the correct one. We are watching the three statements. One is that it separated the closely related species since they were based on a few characteristics. The second one, it gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. And the third one is that this is not acceptable as the vegetative characters are more easily affected by environment. In this case, all the three statements are correct. So here, the correct answer is D. So let's now focus on every statement. First of all, since the artificial system of classification was based on just a few characters, so it was misleading, and sometimes the closely related species were set apart. They were just put into completely different, distant groups due to just taking into consideration just a few characters. Let's now just take the example of kingdom protista. So when this kingdom had been formed, so it included all the unicellular one, whether it was bacteria, whether it were protozoans, where it be the yeast, whether it be the unicellular algae. So they were just put into kingdom protista just because they were unicellular. Just one character was the basis for the inclusion of all these into kingdom protista. But it is completely erroneous, and it was later corrected by R.H. Whittaker, who returned the different members into the parent groups, and only a few who were not fit into any of the parent group. So they were just maintained along with the protozoa in kingdom protista. So let's now just see the second one. It gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. So it is equally true. Since the artificial system of classification was not much logical, it was based just on a few characters. So the characters like the structure of leaf, some features of leaf, and stamens, etc., were the basis of classification. So equal weightage was given to the vegetative characters as also the reproductive characters. And as we just see in the next statement, it is correct that the vegetative characters are more easily affected by environment. And if the vegetative characters are affected by the environment, then the very classification will just become haywire. It will just become illogical. It will become irrelevant. So this is why more emphasis should have been given to the sexual characteristics. So it was just further, it was another anomaly with the artificial system of classification. The third one is equally correct, that artificial system of classification is not acceptable as the vegetative characters that it just give the equal weightage to. So they are subject to the changes by the environment more easily.
ओके, सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। कैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, तो ये जस्ट कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे था। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लीफ का कैरेक्टर, कुछ स्टेमन का कैरेक्टर, तो बस इन्हीं के बेसिस पे जो उसको क्लासिफाई कर दिया गया था। और इसके वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे, जो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म थे, तो उनको जो है बहुत डिस्टेंट ग्रुप्स में जो है रख दिया गया था। ठीक है, जो किसी भी तरीके से जो है वो लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं माना जा सकता है इसको। इसके बाद इक्वल वेटेज जो वो दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो ऑर्गेनिज्म के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, उसके बॉडी के कैरेक्टर थे, और जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे, तो उनको भी जो है इक्वल वेटेज जो है वो दिया गया, जो गलत है। जैसा हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो हम बताएंगे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट बहुत इजीली उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा इम्फेसिस जो वो सेक्सुअल कैरेक्टर को देना चाहिए था, जैसा बाद के क्लासिफिकेशंस में दिया गया, जैसे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें ज्यादा वेटेज जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो वो दिया गया। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा इम्फेसिस जो वो दिया गया। तो क्वाइट नेचुरली अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, तो इस तरह से भी जो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो वो बहुत आसानी से जो वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. The system of classification based not only on the external feature but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry is called natural system of classification, artificial system of classification, phylogenetic system of classification, and modern system of classification. The correct answer is natural system of classification. So the correct answer is the natural system of classification. Natural system of classification widened its range. So natural system of classification made use of a vast range of characters that included the external and internal morphology, that used external and internal morphology. The internal morphology includes cell biology, that deals with the ultrastructure of cells, the anatomy, the histology. So all these features were used. Furthermore, embryological information was also used, as also the chemicals found in the plants were also just brought into consideration while classification was done. So this is why natural system of classification is more logical compared to the artificial system of classification. Okay, so here the correct answer is the natural system of classification. It is not artificial because a number of characters were considered and more weightage was given to the reproductive characters. It is also not phylogenetic. Because the phylogenetic system of classification also takes into consideration the evolutionary sequence and evolutionary relationship, that is called phylogeny, along with the other morphological characters, external, internal, and other information. So this was also not the phylogenetic system of classification. The modern system of classification also just includes the phylogeny, and this is why it is also not the case of the modern system of classification, the modern trends of classification. So this is why
the correct answer is the natural system of classification. So here, let's now just move to the next question. यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, तो इसमें जो है काफी बड़े रेंज का यूज किया जाता है, काफी बड़े जो है वो कैरेक्टर्स के रेंज का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसमें कि सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर दैट इज हिस्टोलॉजी, इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट के केमिकल्स दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री, इन सबों का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज होता है। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि इसमें इवोल्यूशन हैज नॉट बीन कंसिडर्ड, इवोल्यूशन जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है तो वो भी क्या है कि वो इवोल्यूशन पे बेस्ड है अलॉन्ग विद अदर कैरेक्टर, तो ये सब चीजें जो है वो इसमें यूज नहीं होती हैं, तो इसी वजह से जो है इट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉट ये जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 105. The classification used by George Bentham and Joseph Dalton Hooker is called this blank system of classification: natural, artificial, phylogenetic, and modern. So the correct answer is the natural system of classification. So this natural system of classification is the correct answer. George Bentham and Joseph Dalton Hooker had just classified the flowering plants, and they had penned down, they had just written 2 books, that the Genda Plantarum and Species Plantarum. Using the same title of the books written by Carolus Linnaeus as well in the past. So the 2 scientists, George Bentham and Joseph Dalton Hooker, who worked in the Royal Botanical Garden, Kew, London. So they had just classified the flowering plants extensively, and they just used the gross morphology as also the internal structure as well. So here they just used the natural system of classification, and they heavily emphasized the floral characters. Floral characters. They're the sexual character. Floral character means sexual. Characters of the flowering plants. Of the flowering plants. Okay. So ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में काम करते थे, और इन्होंने जो है 2 किताबें लिखी, जेंडा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। ये दोनों किताबें पहले भी जो है इसी टाइटल से जो है वो लिखी जा चुकी थी कार्लोस लिनियस के द्वारा, और इन्होंने फिर उसको उस टाइटल को यूज किया और इन्होंने ज्वाइंटली 2 किताबें लिखी। इन्होंने जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का यूज किया, जितने मैक्सिमम फीचर्स हैं वो अवेलेबल थे प्लांट्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उसका इन्होंने यूज किया। इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर्स पे विशेष ध्यान दिया, और ये फ्लोरल कैरेक्टर हैं क्या, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो इसका इन्होंने यूज किया, और इस तरह से उनका जो सिस्टम था तो वो क्या था, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इन्होंने इवोल्यूशन और इवोल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं, उस पे जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का यूज इन्होंने नहीं किया, तो इसी वजह से इनका जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये आर्टिफिशियल भी नहीं है इसलिए क्योंकि इन्होंने ढेर सारे कैरेक्टर्स जो यूज किए थे। मॉडर्न भी हम नहीं कह सकते हैं इसलिए क्योंकि इवोल्यूशन का जो है इन्होंने कोई ख्याल ही नहीं रखा, ठीक है। तो दिस इज वाई देयर क्लासिफिकेशन इज नेचुरल। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेट्स नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट कैरेक्टर। सो the system based on evolutionary relationship
between the various organisms is called natural, artificial, phylogenetic, both A and C. The correct answer is a phylogenetic system of classification. So first of all, let's see the word phylogeny. Phylogeny means the evolutionary sequence, and relationship. So when the system takes into consideration the evolutionary relationship as well, along with the other characters like the gross morphology, internal structure, histology, cytology, embryology, phytochemistry. So this becomes the phylogenetic system of classification. ये क्या बन जाता है? ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन जाता है. फाइलोजेनी का मतलब होता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन किस सीक्वेंस में हुआ, किस क्रम में हुआ, और इवोल्यूशन के क्रम में डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं लिविंग बींग्स के, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी. और जब हम इसको यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में, जब इसको क्लासिफिकेशन में यूज किया गया, दैट मेड द क्लासिफिकेशन मोस्ट लॉजिकल, जिसने क्लासिफिकेशन को सबसे ज्यादा जो है लॉजिकल बनाया, एक्यूरेट बनाया, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेचुरल सिस्टम जो वो नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें इवोल्यूशन का यूज किया गया. आर्टिफिशियल नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो इवोल्यूशन के साथ साथ और भी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है इसके क्लासिफिकेशन में. तो क्वाइट नेचुरली इट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं. It is question number 107. Find the incorrect statement about numerical taxonomy. So here, the first statement is, it is carried out using computers and is based on all observable characteristics. The second one is the number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. The third one is floral characters are given more importance than vegetative characteristics. And the fourth one is hundreds of characters can be considered in it. So here, the incorrect statement is that the floral characters are given more importance than vegetative characters. So this statement is incorrect. Actually, numerical taxonomy just gives equal weightage to vegetative as also floral characters. Okay, this is why numerical taxonomy is sometimes referred to as the glorified natural system of classification. Because it considers hundreds of characters and gives equal weightage to all of them. Okay, so sometimes it is also just referred to as a glorified natural system of classification. It is also known as phonetics. Natural system of classification is also known as phonetics. It is also known as Adansonian taxonomy. It is also known as Adansonian taxonomy, first proposed by Adanson, the scientist. तो अभी हमने जो ये चार स्टेटमेंट जो हमने देखा है, तो इसमें तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो फ्लोरल कैरेक्टर पर ज्यादा जोर देता है कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये गलत. ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी
हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो वो यूज करता है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको यूज करता है, ठीक है, लेकिन सबों को इक्वल वेटेज देता है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें कि इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सही है, सारे कैरेक्टर्स जो हैं, तो ये जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनका ये यूज करता है, ठीक है, लेकिन इवोल्यूशनरी फीचर को जो वो कंसिडर नहीं करता है। और इसमें जो है ना, ये अगर मौजूद होता है तो इस प्लस साइन दिया जाता है, अगर कोई कैरेक्टर जो किसी ग्रुप में एब्सेंट है तो उसको नेगेटिव साइन दिया जाता है, ठीक है, और अगर मान लिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल जैसे ऑप्शन जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन, सभी कैरेक्टर्स जो है तो उनमें नंबर और कोड जो दिया जाता है और डाटा जो है उसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में फीड करके, ठीक है। तो नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा इज fed to the computers and it is processed, and on this basis the classification is made. Let's now see the last statement. Hundreds of characters can be considered in it. It is completely correct. Hundreds of characters can be considered, ठीक है। तो सैकड़ों कैरेक्टर जो है तो इसमें जो वो यूज होता है, इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, उनको प्रॉपर जो वो कोड्स और नंबर दे करके जो कंप्यूटर में फीड करके जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। So let's now just see the next question. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इसका जो है ना ये C is the incorrect statement, ठीक है, and this is why it is the answer. Let's now just see the next question. The study of the following is not a part of cytotaxonomy. A. Chromosome number. B. Cell structure. C. Structure of nucleus. And D. Chemical constituent of the plants. Here the correct answer is D. Yeah, D is the correct answer because it is not a part of cytotaxonomy. First of all, let's see what cytotaxonomy is. So cytotaxonomy is a part of the modern trends of taxonomy in which the different features of cells are used and they are incorporated into the classification. So when classification is done, so a number of the cellular features are also considered. For example, the organization of kingdom Monera. Kingdom Monera heavily relies on cytotaxonomy because it includes the prokaryote. The prokaryotes. So prokaryotes have been separated from the eukaryotes purely on the basis of the cellular characters. Some other vegetative characters are also a bit different, but mainly it is the cellular features by which the prokaryotes differ from the eukaryotes. तो यहाँ पर हम देखें कि साइटोटैक्सोनॉमी जो है ये सेल के फीचर्स का जो है वो यूज करता है, ठीक है। और अगर हम चौथा ऑप्शन देखें, if we see the fourth option, that is the chemical constituent of the plant, so this comes in the realm of the chemotaxonomy, ठीक है। अगर हम चौथा ही ऑप्शन देख रहे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी नाम के एक दूसरे जो है वो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी में आता है। ये दूसरे जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ टैक्सोनॉमी के एक दूसरे जो वो पार्ट में आता है, दैट द कीमोटैक्सोनॉमी। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो वो किसमें आता है, ये कीमोटैक्सोनॉमी में आता है। So chemotaxonomy makes use of the
chemicals present in the living beings तो यहाँ पर जो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनको जो कीमोटैक्सोनॉमी में यूज करते हैं. सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी. ये साइटोटैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कीमोटैक्सोनॉमी के तहत आता है. और इसी वजह से जो है बाकी जो ये जो है ऑड मैन आउट है और ये साइटोटैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम देखें क्रोमोसोम नंबर, सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये सब के सब जो है दीज आर द सेलुलर फीचर्स and they are the part of cytotaxonomy. Chromosome number, cell structure, structure of nucleus, they are all the part of cytotaxonomy being the cellular features. Okay, so let's now just move over to the next question. Question number 109. So in the given question, there is an assertion and its reason. The assertion is the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. The reason, classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into either category. So what we have to do here? If both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion, then we will just mark A. If both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion, then we will mark B. If assertion is correct, but the reason is incorrect, we will mark C. And if both assertion and reason are incorrect, then we will mark D. So here we will see that the assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. So this is why the correct answer will be A. So let's now discuss it. This is actually the correct answer. So how it is there? Let's now just find out. The two kingdom classification used for a long time was found inadequate. It is perfectly correct, and this is why more kingdoms were framed. Ernst Haeckel gave another kingdom, that is kingdom Protista. Copeland gave one more kingdom for the prokaryotes, that is the kingdom Monera. And Robert H. Whittaker gave one more kingdom, that is kingdom Fungi. And Carl Weiss gave the sixth kingdom classification, in which he just carved out two kingdoms out of kingdom Monera, that is the kingdom Archaebacteria and kingdom Eubacteria. That were also the two domains, that is archaea and bacteria. And the rest of the eukaryotes just came into the third domain, that is the eukarya. So here, the assertion is completely true. Classification of organisms. Now let's see the reason. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into either category. So the major drawback of the two kingdom classification was that many organisms that were included in them, so they just shared the character of both the groups. The best example is Euglena. For Euglena, which is also called a link between the plants and animals. Just shares many characters with plants as also animals. So on one hand, Euglena has got the chloroplast. So plant characters, it contains chloroplast.
Second, it can perform photosynthesis in light. On the other hand, the animal characters are that the animal cellular characters were that first, it does not have cell wall. Second, it can have the holozoic mode of nutrition. Like paramecium. So this is why it was always a bone of contention between the botanists and the zoologists. And finally, Ernst Haeckel just created another kingdom, that is kingdom Protista for it. So it was later placed in a new kingdom. In a new kingdom, Protista, created by Ernst Haeckel. So it was a major drawback of the two kingdom classification that it contained a number of members who had the character of more than one group, and this is why the creation of more kingdoms was needed. So in this way, the correct answer is A, that the assertion is true, and the reason is the correct explanation of the assertion. तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें इस क्वेश्चन में जो है ना दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, assertion और रीजन. अगर assertion और रीजन करेक्ट है और रीजन जो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो फिर हम ए मारेंगे, हम ए पे टिक करेंगे. अगर assertion और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, तो हम बी को चूज करेंगे सही आंसर के रूप में. अगर assertion सही है और रीजन सही नहीं है तो फिर हम सी मार्क करेंगे, और अगर assertion और रीजन दोनों गलत हैं तो हम डी मार्क करेंगे. तो यहाँ पर जो है ना अगर हम assertion देखें तो ये कहता है कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, तो ये जो है इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त जो वो पाया जा रहा था. ठीक है, और इसका रीजन जो है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वो इजीली किया जा सकता था. ठीक है, वो बड़े आराम से समझा जा सकता था, लेकिन कई ऐसे मेंबर्स थे जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते थे, उनका एक अपना कैरेक्टर था, rather they shared the character of more than one group. ठीक है, तो उनको जो है अब कहाँ पे रखा जाए, तो इसलिए न्यू किंगडम का जो वो फॉर्मेशन जो वो जरूरी समझा गया. जैसे हमने एग्जांपल दिया यूग्लिना. यूग्लिना जो है जिसको हम कहते हैं कि इट इज द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की एक कड़ी है. तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये अपना फूड खुद बना सकता है. ठीक है, तो इट कैन जस्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लाइट. ठीक है, और दूसरी तरफ एनिमल कैरेक्टर ये है कि इसमें सेल वॉल जो है वो नहीं होता है, ये इसका सेल नेकेड होता है, और इट कैन हैव
द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है ना अमीबा और पैरामीशियम की तरह से जो है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये इंजेस्ट कर सकता है फूड को, ठीक है, टू बी डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड, ठीक है। तो इससे जो है इसको जो है एक नए किंगडम में रखा गया, क्योंकि हमेशा जो है वो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट के बीच ये विवाद रहा कि यूग्लिना जो वो प्लांट है एनिमल है। तो इस वजह से अर्न्स्ट हैकेल ने जो है, जो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नया किंगडम जो क्रिएट किया, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा, और उसमें इसको प्लेस किया गया। और भी कई सारे यूनिसेलुलर मेंबर्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको जो उसमें रखा गया अलॉन्ग विद यूग्लिना, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे जरूरत महसूस हुई तो किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई, इनका क्रिएशन हुआ। और कार्ल वीज ने तो मुंडा को भी डिवाइड कर दिया आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया नाम के दो किंगडम में। दैट ऑल्सो जस्ट फॉर्म द टू डोमेन, जो दो डोमेन जो वो के तहत आते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया, ठीक है। तो इससे जो है ये नए किंगडम्स का जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो वो क्या है, ए। अब हम लोग दूसरी तरफ क्वेश्चन की तरफ चलें। लेट्स नाउ जस्ट स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Spores produce sporophyte by mitosis. A plant may have both sporophyte and gametophyte. C. Gametophytes produce only gametophyte and sporophytes produce sporophytes. D. Production of only gametophytes by a gametophyte and only sporophytes by a sporophyte is called alternation of generation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पोर्स जो है वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं माइटोसिस। सेकंड स्टेटमेंट है कि एक प्लांट जो है उसमें स्पोरोफाइट भी हो सकता है, गैम्प्रोफाइट भी हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि गैम्प्रोफाइट सिर्फ गैम्प्रोफाइट प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरोफाइट जो सिर्फ स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो कहता है कि गैम्प्रोफाइट जो सिर्फ गैम्प्रोफाइट प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस फेनोमेनन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इफ वी जस्ट सी, तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज B. B is the correct statement. A plant may have both a sporophyte and gametophyte. Okay. So first of all, what are sporophytes? A sporophyte is the diploid phase of the plant that just produces the sexual spores. Gametophyte is the haploid phase of a plant that just contains that bears the sex organs and it produces the gametes. Okay, so a plant may have both sporophytes and gametophytes. Okay, so this statement is correct, and the sporophyte just produces spores which are haploid. A sporophyte is diploid, so this involves sporic meiosis, the reduction division. Now a spore gets germinated. Now a spore germinates to form the gametophyte, which is actually haploid. So a gametophyte bears the sex organs, and the sex organs produces the male gamete and female gamete. So here the male gamete and it is the female gamete by mitosis. So they are also N and N. Subsequently, there is syngamy in between the two. And so there is syngamy, and there occurs the formation of zygote, and zygote finally produces the sporophyte by mitotic divisions. So mitosis leads
to formation of the new sporophyte. In this way, a sporophyte produces gametophyte and gametophyte produces a sporophyte in those plants in which both sporophyte and gametophytes are well developed. So this is called alternation of generation. So here, if we just see that a sporophyte and it is gametophyte. So a sporophyte produces gametophyte and gametophyte produces a sporophyte. So this just continues, and this is called alternation of generation. A term given by Hofmeister. Okay, so in the light of this statement is correct. A plant may have both a sporophyte and gametophyte, and as we can just now see that spores produce gametophyte by mitosis, not the sporophyte. If we just see the third statement, C, gametophyte produce only gametophyte and a sporophyte produce a sporophyte, it is again wrong because gametophyte produces a sporophyte and a sporophyte produces a gametophyte. And this is why the fourth statement is also incorrect, because the production of the sporophyte by gametophyte and gametophyte by sporophyte is called alternation of generation, and not the production of gametophyte by gametophyte or sporophyte by sporophyte. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें बी जो है करेक्ट आंसर है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दोनों एक ही प्लांट में हो सकते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में. ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है. अगर हम इस फिगर को देखें, इस लाइफ साइकिल को अगर हम देखें, तो पहला स्टेटमेंट जो वो गलत है. स्पोर प्रोड्यूसर स्पोरोफाइट, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पोर्स जो है तो वो गैमेटोफाइट जो वो फॉर्म करते हैं बाय माइटोसिस. यहाँ पर जो है ना बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस स्पोर जो वो जर्मिनेट करता है और वो गैमेटोफाइट बनाता है, या स्पोर जो वो गैमेटोफाइट जो वो कितना भी रिड्यूस्ड हो लेकिन गैमेटोफाइट जो वो सेक्सुअल स्पोर से बनते हैं. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि गैमेटोफाइट जो है तो वो सिर्फ गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है और स्पोरोफाइट सिर्फ स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है. ये भी गलत है, क्योंकि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट जो वो गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर रहा है और गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन कर रहा है. गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट प्लांट का वो फेज है जो कि सिर्फ गैमीट का प्रोडक्शन करता है. जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट जस्ट प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूस कर रहा है गैमीट्स को, जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट. ठीक है, और स्पोरोफाइट जो है वो फेज है प्लांट का जो म्योटिकली स्पोर का प्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है. तो क्वाइट नेचुरली स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को जन्म देता है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसी वजह से जो चौथा स्टेटमेंट है डी जो है वो भी गलत है. ठीक है, तो एकमात्र जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक प्लांट जो है चाहे वो ब्रायोफाइट हो वो टेडोफाइट हो, ठीक है, तो उनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों पाए जा सकते हैं. ठीक है, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं तो दे हैव गॉट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे हैव गॉट द लाइफ साइकिल दैट इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Let's move to the next question. The plant having alternation of generation is fucus, gymnosperm, angiosperm, none of these. यहाँ पर जो सही आंसर है वो है none of these. The correct answer is none of these. Neither fucus, nor gymnosperm, nor angiosperm have got the alternation of generation. Actually, all the three plants have got the diplontic life cycle, as you must have just read in your NCERT book. So all the three are the example of diplontic life cycle, in which the life cycle runs in the diploid phase
the gametes being the only haploid structures. So diplontic life cycle doesn't have the alternation of generation, just as the haplontic life cycle too doesn't have the alternation of generation. Okay, so only haplontic life cycle, only diplontic life cycle do not have the alternation of generation. So it is only the haplodiplontic type of life cycle that has got the alternation of generation, as we had just seen in the previous question. So here there is a no alternation of generation. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 प्लांट्स के की कैटेगरीज दी गई हैं. एक फ्यूकस जो कि एक ब्राउन एल्गा है, जिम्नोस्पर्म दैट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स और अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स. ये तीनों में जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और इसी वजह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कहाँ पे होता है, क्या हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वो वहां पे होता है जहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट. जहां हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वहीं पर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. ठीक है, जहां गैम्टोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म देता है और स्पोरोफाइट जो वो गैम्टोफाइट जो है वो पैदा करता है. ठीक है, तो इस लिहाज जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी. इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चले. Let's now move to the next question. Pteridophytes have haplontic life cycle, diplontic type of life cycle, haplodiplontic type of life cycle, both A and B. The correct answer is a haplodiplontic type of life cycle, C. ये हम बता दें तुमको कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है. I must just make it clear that both bryophytes and pteridophytes have got the haplodiplontic type of life cycle and they have got the alternation of generation. Okay, so if we just remember what I had just taught you in the previous question, that in the haplodiplontic type of life cycle, both gametophytes, the haploid phase gametophyte, as also the diploid phase sporophyte are present, and gametophyte gives rise to a sporophyte and a sporophyte gives rise to gametophyte. That's the alternation of generation. So there is alternation of generation in bryophytes and pteridophytes, and they have got the haplodiplontic type of life cycle. So bryophytes and pteridophytes have haplodiplontic type of life cycle. Type of life cycle. So whereas in case of bryophyte, the main plant body is the haploid gametophyte, and sporophyte is the gametophyte dependent secondary structure. On the other hand, in case of pteridophytes, the sporophyte is the main plant body and gametophyte gets reduced as a side structure, that is the prothallus in case of ferns or the internal gametophytes in case of the non-ferns. So here, इस क्वेश्चन को हम देखें तो टेरिडोफाइट्स में कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है. ये जो लाइफ साइकिल है इसमें इनमें स्पोरोफाइट भी होता है और गैमेटोफाइट भी होता है. ठीक है, तो इट इज ट्रू विथ टेरिडोफाइट के लिए सही है. ठीक है, और इनमें जो है गैमेटोफाइट भी होता है जो कि साइड बॉडी है और स्पोरोफाइट भी है जो मेन प्लांट बॉडी है. तो इस वजह से द करेक्ट आंसर इज सी. यहाँ पे हम बता दें कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, और जहाँ ब्रायोफाइट जो उनमें गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट वो मेन प्लांट बॉडी होता है और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट जो है एक साइड स्ट्रक्चर है. तो वहीं पर टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है और गैमेटोफाइट जो है एक साइड स्ट्रक्चर है. ठीक है, so that option C is correct. So let's now just switch over to the next question. In bryophyte, gametes are haploid, spores are haploid, zygotes are haploid, both A and B.
यहाँ पर हम ये बता दें कि zygotes are always diploid. Zygotes are actually the product of syngamy. They are the product of fertilization, and it is the fusion between the two gametes, fusion of the two gametes. So this is why the number of the chromosome becomes double and zygote becomes diploid. So this is outrightly incorrect. Gametes are haploid, it is correct. In bryophyte, the spores which are produced in the sporophyte are also haploid. They are produced meiotically. It is also correct. Okay, so the correct answer is D. The correct answer is D, both A and B. Let's just see the life cycle that I had just discussed in the previous question. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस लाइफ साइकिल पर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स जो हैं तो ये भी हैप्लॉइड हैं, दे आर एन. यहाँ गैमीट्स जो हैं ये भी हैप्लॉइड हैं, देयर इज एन. तो इस वजह से क्या है, दोनों ही के दोनों हैप्लॉइड हैं और ये जो ब्रायोफाइट के केस में सही है. ठीक है. सो हियर इन दिस लाइफ साइकिल दैट वी जस्ट सी हियर, so spores are haploid, as we can just see the n number. The gametes are also haploid, as we can just notice the n number of chromosome. So both are actually haploid. And on the other hand, zygote, which is formed by the fusion of the two gametes, is a diploid. It is 2n. Okay. So the correct answer is D. So let's now switch over to the next question. That is question number 114. Match column 1 with column 2 and select the correct options from the quotes below. Column 1, column 2, let's read them. Non-vascular cryptogram A, non-vascular cryptograms. And here in column 2, the option is B, gymnosperm and angiosperm. B, pteridophytes, vascular cryptograms. C, phenogames. R, algae and bryophyte. So if we just match, so we just find this relationship. The algae and bryophytes, they are non-vascular cryptograms. Algae and bryophytes are non-vascular cryptograms. Pteridophytes are vascular cryptograms. And phenogames include gymnosperm and angiosperm. So the correct option is A. The correct option is A. So let's now discuss it. First of all, what are cryptograms? Cryptograms, cryptos means hidden, gamos means marriage. So cryptograms are the plants which have inconspicuous sex organs and do not form the seed. They are seedless plants. So both pteridophytes as also algae and bryophytes, so they are the members of cryptograms. Algae, bryophyte, pteridophyte, all the three are the cryptograms. Algae just comes in the division Thallophyta along with lichen, and bryophytes and pteridophytes, so they are all cryptograms. It is only the pteridophytes that just that have developed xylem and phloem in their sporophyte. In pteridophyte, a sporophyte is the main plant body, and it contains the conducting elements like xylem and phloem. So pteridophytes
are the cryptograms. Are the cryptograms with xylem and phloem in their sporophyte, the main plant body. The main plant body. They are therefore the vascular cryptograms. The vascular cryptograms. Now let's see phenograms. Pheno means open and gamos means marriage. So phenograms are the plants which have got easily noticeable, conspicuous. Conspicuous means easily noticeable reproductive parts. Parts like cones, like flowers. So the members. So gymnosperms, and angiosperms are included in the category of phenograms. Of phenograms. So the correct option is A. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, इसमें एल्गी और ब्रावोफाइट्स आते हैं, टेरोफाइट्स वो वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है तो वो फेंडोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं, वो फेंडोग्राम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम ये गौर करें कि क्रिप्टोग्राम्स हैं क्या। क्रिप्टोग्राम्स वो हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं तो वो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, और क्रिप्टोग्राम्स का मतलब ही होता है कि हिडन मैरिज, यानी कि हिडन विवाह। तो यहाँ पर जो है ना ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं तो वो बहुत नोटिसेबल नहीं है, और साथ में उनमें सीड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। टेरोफाइट ये भी एक क्रिप्टोग्राम है, लेकिन टेरोफाइट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्रिप्टोग्राम से,
क्योंकि इनमें जो स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट बॉडी है, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसमें कंडक्टिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, वैस्कुलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एंड दिस इज वाई, इसी वजह से जो है टेडोफाइट्स हैं वो वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स वो कहलाते हैं। फेंडोग्राम्स हैं, ये वो प्लांट हैं जिनमें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो काफी नोटिसेबल हैं, ठीक है, इजीली नोटिसेबल हैं, जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दे आल्सो फॉर्म सीड, ठीक है, वो जो वो सीड भी वो बनाते हैं, दे फॉर्म सीड्स। ओके, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए आर। A matches with R, B matches with Q and C matches with P। A जो है उसकी मैचिंग R के साथ, B की मैचिंग जो वो Q के साथ, और C की जो मैचिंग है वो P के साथ। ओके, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।